हेलो दोस्तों, वेलकम इन एमएमटी डिजिटल स्कूल्स। दिस इज आदित्य वर्मा एंड आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेब सर्वर आईआईएस क्या है, इसके बेसिक्स क्या क्या है और ये क्यों यूज होता है। इस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है और ये बाइंडिंग और एप्लीकेशन के साथ कैसे काम करता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो आप आईआईएस के साथ काम करना शुरू कर सकेंगे और अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट होस्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले kindly subscribe our channel and get informational video like this. So, let's get started. IIS या इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस क्या है? IIS सर्वर मीन्स इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। IIS एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। IIS वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस को होस्ट करने के लिए यूज किया जाता है और इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए यूजर्स के द्वारा की जाने वाली अलग अलग रिक्वेस्ट को पूरा करता है। IIS वेबसाइट को जोड़ने, प्रोविजन करने और सिक्योर करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे यूजर वेब ब्राउजर के माध्यम से वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। फिर वो वेबसाइट या वेब ऐप ASP.NET पर बनी हो या PHP पर। So let's install the IIS on Windows 10 and Windows Server 2012. First open the control panel, then open program, then turn Windows features on or off and just check Internet Information Services and press OK button. It takes some time to complete the installation. Now go to Start button and search IIS in search box and open it. This is IIS Management Console और अब हम अपना सारा काम इसी console पर करेंगे। Now let's install IIS on Windows Server 2012. Just open the Start menu and click on Server Manager. Now click on the Manage and Features to add a role. Then select Role-Based or Feature-Based Installation and click on Next. Here is my server and I am installing it. अगर आप remote server manage कर रहे हैं तो make sure कि आपने appropriate server को select किया है. Now scroll down and check Web Server IIS. ये कुछ roles and feature पूछेगा, आपको simply add features पे क्लिक कर देना है। आपके सामने IIS से related services की लिस्ट आ जाएगी। मैं सिंपली कुछ basic features जैसे ASP.NET 3.5 और 4.5 को ऐड कर लूंगा और मैं मैनेजमेंट सर्विस को भी सेलेक्ट कर लूंगा ताकि इसे रिमोटली मैनेज किया जा सके। आई थिंक इतना काफी होगा। बाद में जैसे हमें काम होगा वैसे वैसे हम अदर सर्विस को इंस्टॉल कर लेंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज मैं YHA पर मेंशन करना चाहूंगा कि try to add .NET Framework 3.5 because it will ask you for the installation directory which is located on the Windows installation disk or ISO file. So now just click on specify and alternate and open your source path and open your installation disk or ISO file. Then source folder के अंदर open select a folder and copy this directly to installation wizard. Now click on install and begin the installation. Alright, हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसे क्लोज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि IIS रोल हमारे में सर्वर मैनेजर के डैशबोर्ड में ऐड हो चुका है। Now open tools and open Internet Information Services Manager और ये मैं console है and here is a site section. We had a default website that is a add automatically. Let's click on browse and test it. This default website is working and everything looks great.
आगे बढ़ने से पहले हम माइक्रोसॉफ्ट के एक और टूल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये टूल बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम IIS वेब सर्वर को मैनेज करते हैं। इसका नाम वेब प्लेटफॉर्म इंस्टॉलर है। सो लेट्स डायरेक्टली इनटू टॉपिक एंड देखते हैं कि ये टूल कैसे काम करता है। जस्ट ओपन Firefox and search Web Platform Installer. Just open it and click on download and install it. And now here we are. This is the tool installed and ready to use. जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं like products and applications and so on. Basically इसका काम IIS के कुछ important components and model को इंस्टॉल करना है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे काम के सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसे हम अपने IIS सर्वर पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ सर्च करते हैं URL rewriter टूल, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है IIS का। हम जस्ट इसे इंस्टॉल कर लेते हैं and here is the installation starts. चलिए अब हम अपनी फर्स्ट वेबसाइट बनाते हैं और देखते हैं कि इसे IIS पर कैसे होस्ट करना है। Just click on Server Manager icon and open it. Then click on Tools. Then click on Internet Information Services. अगर आपको याद होगा तो हमारे पास एक डिफॉल्ट वेबसाइट है। हम इसे ब्राउजर में ओपन करते हैं। Just go on browser and टाइप करना है localhost. So now let's get started. To create our own custom website, just right click on site and click on add a website. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साइट नेम मांग रहा है। ये नेम कुछ भी हो सकता है, जो भी आप रखना चाहे, प्रोजेक्ट नेम और वेबसाइट नेम, whatever you want. मेरी सजेशन है कि आप अपने साइट का नाम वही रखें जो आपका डोमेन नेम है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर इसका नेम website1.com डाल देते हैं and set the path where your website files are located. I will select my sample website in the initpub folder directory in the C drive, which is a default path that come with the web server manager. Select my path web server 1. Let's see where is located. Open C drive, then initpub folder, and here we have website 1 and here is website. Let's open the index page. It's a sample of HTML static website. Let's open it and here is the sample website. Now the second option we have to set is the bindings. Bindings are very important. I will explain it in a little bit, but for now bindings is a method that the IIS uses to identify websites upon requests. So when a user requests a certain website, using its host name, the binding is responsible for identifying and getting the website on that request. Bindings में हमें 4 चीज सेट करनी होती है। फर्स्ट प्रोटोकॉल टाइप, हम जो चाहे अपने नीड के अकॉर्डिंग HTTP और HTTPS सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट को और भी सिक्योर बनाने के लिए SSL यूज होता है। सेकंड थिंग जो हमें सेट करनी होती है वो है IP एड्रेस एंड इसके बाद हम पोर्ट नंबर सेट करेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि HTTP बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पर काम करता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड लास्ट में हमें अपना होस्ट नेम सेट करना होता है। सिंपल भाषा में समझे तो ये आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम होता है। Oops, we have opened the local host and the default website open and not open new website. हमने यहाँ पर गलती से सेम बाइंडिंग्स बना दी। No issue, we can change the name of website now. So, to fix this we have to edit the bindings. To edit the bindings of our website, and we have to change the host name to a certain canonical name for us.
since this is a lab and we don't have a public domain name to use. I will do a simple trick using the host file. वो trick ये है कि just open the notepad as administrator mode and then open the hosts file, navigate to C, Windows, System32, drivers etc folder, then click on show all files, and here is the host file. Let's add a record in this host file. I will say 127.0.0.1, which is a local address. Let's map it our domain name website8.com. What this file is it? Somehow acts as a local DNS for your Windows server. So, it can map an IP address to your domain name. In this way when we map our domain to the local PR है so इसीलिए हमें इसे local server पर open करना चाहिए. Now, just click on save and close it. App binding site का name website1.com डालकर सेव कर देंगे and चलिए ऐप इसे ओपन करके देखते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं website1.com open है and it looks good. So now, we have two websites. One says default website and second website is website1.com. Just right click on website and click on explore to open the physical directory and check your all files from here. So, same इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट या कोई वेब एप्लीकेशन इजीली बनाकर IIS सर्वर मैनेजर के अंदर होस्ट कर सकते हैं. ऐप बाइंडिंग को थोड़ा और डीप में समझ लेते हैं. हम मान लेते हैं जैसे कि कोई यूजर हमारे वेबसाइट www.webom.com को सर्च करता है तो वर्ल्ड वाइड DNS को वो रिक्वेस्ट मिलेगी और वो उस वेबसाइट के सर्वर को टारगेट करेगा और कंप्लीट प्रोसेस आपकी IP के थ्रू होगा. So, जब भी हम किसी भी वेबसाइट को लाइव करेंगे तो हमें एक सर्वर सेलेक्ट करना होगा. लेकिन एक सर्वर के अंदर तो बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, तो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि यूजर ने कौन सी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट भेजी है? तो FYHA काम आती है वेबसाइट बाइंडिंग्स. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इसे और किस तरह से यूज कर सकते हैं. We can use multiple parameters to identify or differentiate between websites on the same server by the domain name and the host name. Like in our case where we are using webom.com as the host name or maybe using the IP address or even the port number. Also IIS will know if the connection is secure, then using HTTP as protocol by looking at the configuration of the bindings for this website. I hope आपको बाइंडिंग्स के बारे में काफी कुछ समझ आ गया होगा कि बेसिकली बाइंडिंग्स काम कैसे करती है. पहले इस डिफॉल्ट वेबसाइट को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम इससे दोबारा यूज नहीं करने वाले. हम अपनी कस्टम वेबसाइट्स पर ही काम करेंगे. Now, we have website1.com. एक बार फिर से इससे चेक कर लेते हैं. Open the browser and insert the website name. Ooh, it looks good. Now, let's right click on the website and click on the edit bindings. अपनी bindings को सिलेक्ट करेंगे और edit पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी सर्वर नेम को हटाकर अपनी IP को सिलेक्ट करेंगे. ये हमारे सर्वर का डिफॉल्ट IP है. Now press OK and now close the browser. और आप अपने ब्राउज़र पर वापस आएंगे और URL में अपनी IP इंसर्ट करेंगे. It's work. जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट IP एड्रेस है. जैसा कि देख सकते हैं, मैंने पोर्ट नंबर 81 सेट कर दिया है. चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है. जैसे ही हम अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो सी वेबसाइट विल फेल टू लोड. अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने वहां पर 81 पोर्ट नंबर डाला है, जबकि बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउज़र पोर्ट 80 का यूज करती है HTTP प्रोटोकॉल के साथ काम करने के लिए. That's why it's failed. So now,
इसे सही करने के लिए सिंपली हमें वेबसाइट एड्रेस के साथ पोर्ट नंबर बताना पड़ेगा। जस्ट टाइप :81 आफ्टर द पोर्ट नंबर। नाउ इट्स वर्क परफेक्टली। अब हमारी वेबसाइट पोर्ट नंबर 81। नाउ जब भी हम एक IIS के अंदर एक वेबसाइट बनाते हैं तो IIS विजार्ड में एक एप्लीकेशन पूल बना देता है। जब भी हम अपनी वेबसाइट को एक सर्वर पर होस्ट करते हैं तो उस वेबसाइट की प्रोसेसिंग और एग्जीक्यूशन एक वर्कर प्रोसेसर के थ्रू करता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन पूल। इसलिए एप्लीकेशन पूल ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं। Now, each website can have its own application pool, or you can create multiple websites that use the same application. हम अपने सर्वर पर वापस आते हैं। We can find the list of the application pool here by click on the application pools icon, and here is the list of application pools on your server. जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो वेबसाइट है और दोनों को अपने अपने एप्लीकेशन पूल्स एसोसिएट कर रहे हैं। नाउ न्यू एप्लीकेशन पूल ऐड करने के लिए आपको सिंपली राइट क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन ऐड एप्लीकेशन पूल, इंसर्ट द नेम ऑफ द एप्लीकेशन पूल एंड हियर वी हैव टू ऑप्शंस द फ्रेमवर्क एंड द पाइपलाइन मोड। Generally, if your application is using .NET, then select the appropriate framework from the list. If it's PHP website or a website that is not using .NET, then you can use non-managed code in the pipeline mode. Now go in advanced setting in any website and change the application pool. You want to run your website on it. Now open browser and open website1.com. And now open the task manager. Go in details and scroll down. You can see the WPW process. This is the process of the worker processor that is associated with the web applications pool. You can see the username website1.com, which is identify our website's app. आप अपनी दूसरी वेबसाइट website2.com ओपन करते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि वेबसाइट 2 के लिए अनदर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। So, this is that I am talking about प्रोसेसर या वर्कर प्रोसेसर, जो भी आप इसे कहना चाहे। अगर दोनों वेबसाइट सेम एप्लीकेशन पूल पर काम करती है तो हमारे पास सेम प्रोसेसर होगा दोनों वेबसाइट के लिए। अगर आपको चेक करना है कि प्रोसेस IIS मैनेजर के अंदर काम कर रहा है कि नहीं, just click on the server node and click on worker processes and he will find all worker processes running on the server. आप इसमें CPU usage and process its Now, ये सब तो ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन पूल का यूज करने का एक मेन रीजन और भी है। जैसे कि हमने पहले जाना कि हम बहुत सारी वेबसाइट सेम एप्लीकेशन पूल पर बना सकते हैं और हम बहुत सारे एप्लीकेशन पूल को सेम सर्वर पर बना सकते हैं। This architecture will provide isolation for our website. ये एक दूसरे से अलग बनाती है, सो आइसोलेशन एक मेन रीजन है एप्लीकेशन पूल को यूज करना। Now we can use different framework like framework 2 in the first application pool and framework 4 for the other one. हम इसमें अलग अलग सिक्योरिटी और अलग अलग सेटिंग भी कर सकते हैं हर वेबसाइट्स के ग्रुप के साथ। One more thing you have to know. Let's take this example. Suppose आपकी किसी वेबसाइट के दो फोल्डर्स हैं, सर्विसेज फोल्डर and the other one is कार्ड फोल्डर, और हम दोनों को अलग अलग एप्लीकेशन पूल में रख देते हैं। एप्लीकेशन पूल 1 एंड एप्लीकेशन पूल 2 पर टेस्टिंग के टाइम हमारे सर्विसेज वाले फोल्डर में कोई बग या एरर है जिसके वजह से एप्लीकेशन पूल रीबूट हो गया है। 2. इस कंडीशन में हमारा कार्ड वाला फोल्डर सेफ रहेगा, उसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा। See how to set up FTP server on your web server in order to access your files and website using FTP. First thing we have to do, navigate the server manager and be sure to install FTP server feature or role click on manage.
Add roles and feature navigate to the server roles and navigate down to web server and check FTP server expanded and check FTP accessibility and install it. Wait for the complete the installation. Let's open the web server manager again. Click on server node. Now just right click and see. हमारे पास FTP साइट ऐड करने का ऑप्शन आ गया है। अब एक FTP ऐड करके चेक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसका नेम web1 FTP लिखते हैं and select physical path C के under init pub website 1 for the example, and now select the binding, select any IP address and port number would be 21 that IIS used. We can select the SSL to be used also, then it will be SFTP. Now start the FTP. Let's click on next to set the authentication, and always remember don't use anonymous. ऐसा करने से कोई भी anonymous person आपकी वेबसाइट को easily access कर सकता है and आपके डेटा को चुरा भी सकता है। So always use basic authentication and select the users you want. You can select specified users. And let's say as an example, admin, and you select the permission to read and write या only read. ये आपके ऊपर है and now click on finish. Now you have this web FTP can access remotely using FTP client. Now अपने FTP को आप चेक कर लेते हैं. Open browser and search FTP client and आप इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ काम कर सकते हैं। मैं FileZilla पर काम करता हूँ। Simply download it and install it. After installation, just put localhost, username, admin, पासवर्ड की जगह आप अपने विंडोज के एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड की इंसर्ट कीजिए and insert port 21 and click on quick connect. ये कनेक्ट हो गया and you can see हमारी वेबसाइट्स की लिस्ट्स आ गई है and this is a file FTP will help you when you want to update your data or files or your website from directly synchronized from your local machine, which is the developer machine, to the targeted website. You can synchronize directly by uploading, downloading files, as you can see upload file in, download file and so on. इस तरह से आप FTP सर्विस को अपने वेबसाइट में कॉन्फ़िगर करके FTP क्लाइंट के थ्रू अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड लास्ट, वीडियो खत्म करने से पहले हम देख लेते हैं कि वर्डप्रेस को अपने IIS सर्वर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। Just open your server node and click on Web Platform Installer that we installed in the last lecture. Just double click to open it and wait. Now simply search for WordPress. Just click on Add and install it. Now ये आपसे कुछ permission मांगेगा. Just fill it and rest will be configured automatically, and this is show you that it will install WordPress with MySQL. For Windows simply click on accept and now wait for installation and finish it. If you want to do manually, उसके लिए आप MySQL connectors like MySQL, SDKs, MySQL को simply डाउनलोड कर सकते हैं and WordPress डाउनलोड करके easily configure कर सकते हैं। वेब प्लेटफॉर्म इंस्टॉलर ऑटोमेटिक सब इंस्टॉल कर देता है। इसके लिए आपके विंडोज में IIS सर्वर जरूरी है। Now installation is finished. Now configure your website. Just select new website and give the name of the site and so on. Now IP address is all unassigned and port number should be 80 and host name कुछ भी दे सकते हैं like www.mywp.com and इस होस्ट नेम को अपने होस्ट फाइल में सेव करना होगा जैसे कि लास्ट टाइम किया था। And open Notepad as administrator and open the hosts file. It's in the C drive. Windows, System 32, drivers, etc. Click all files. And here, the host file.
and now paste the host name here. Save and close the file. Now click on Continue. Now here, we have to set some authentication keys that WordPress uses. You can use any phrases for now. Type 123456789_0 at WordPress and copy it. And here, just copy the security keys and click on Continue and the configuration. Now installation is start. Web Platform Installer. And now, it's done. It shows your database name, username, and password of your database. Now, you can see WordPress has installed. Now, configure your website and enjoy. I hope you like the video and get some knowledge gained from this video. You can now start working with Web Server IIS. Hope you like the video. Follow interesting and knowledgeable video like this. So stay tuned and see you in next video. Thank you.